All right, now we're going to understand the outer layer or the outer covering on the brain. So right now you have 3 layers that will be visible. जो अभी मैंने यहाँ हाथ में दिखा रखा है, ध्यान से देखेंगे, जो अभी इसके ऊपर जो कवरिंग दिख रही है ना, जो यहाँ से निकला हुआ है, वो है हमारा पाया मैटर. ये देखो अभी और ध्यान से दिखेगा, इतनी सी एरिया में निकला हुआ है ताकि गायरी और साइरस दिखे. पाया मैटर की ऊपर की लेयर है ये वाली, जिसको बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर, जिसके ऊपर आपको ब्लड वेसल, और ये जो है तीसरी लेयर जिसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर. राइट, 3 लेयर होते हैं ब्रेन के ऊपर. सबसे पहला होता है पाया मैटर, जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है. आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस वीडियो वंस अगेन. This is the brain, and brain has got how many layers of covering? That is 3 layers of covering. You call it as meninges. जो सबसे पहली लेयर है, मतलब ब्रेन को जो टच करती है, वो लेयर को हम बोलते हैं, देखो इसके ऊपर दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे लेयर, हाँ, इसको बोलते हैं पाया मैटर. क्या बोलते हैं? पाया मैटर. इस पाया मैटर के ऊपर, ये इस एरिया में नहीं है, ये जहाँ पे टच करे वहाँ नहीं है, वो निकाल दिया. पाया मैटर के ऊपर एक और लेयर है जिसको बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर. ये जो यहाँ दिख रहा है, एरेक्नॉइड के ऊपर बहुत सारे वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं. अब एरेक्नॉइड के ऊपर ये जो हार्ड है, बहुत ही हार्ड है, इसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर, जो इनके हाथ में है, ड्यूरा मैटर. ओके, इट इज़ वेरी हार्ड, जो ब्रेन को डिवाइड करता है लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर में, और बिल्कुल अच्छा प्रोटेक्शन देता है. सो लेट्स गो टू पेज नंबर 189 टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. पेज 189, heading is 9.6 Human Nervous System. So now we are on page number 189, Human Nervous System. बहुत ध्यान से हर एक लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग. अब कोई स्कोप नहीं छोड़ेंगे इस चैप्टर को अनटर्न करने के लिए. सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस ह्यूमन नर्वस सिस्टम, रिमेंबर इट इज़ क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 3 पार्ट. 3 पार्ट कौन सा है? 1 इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. सेंट्रल जो कि सेंट्रली लोकेटेड है, मतलब आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. That I will explain it to you. But right now when you talk about the outer layers, okay, brain कहाँ पे रखा हुआ है? It is inside a brain box called as skull or cranium, right? Simply you can say cranium, it will be easy for you, because in the previous video I have shown you how the brain, ventral side, okay, I'll show you another video in which the box in which the brain is kept, your skull in which brain is fixed, it is more visible for you, and it is having a canal like structure, you call it as spinal cord, जो कि कनेक्ट करता है आपके बाकी के बॉडी को. तो शुरुआत होती है ब्रेन से, जो सेंटर आपकी बॉडी के सेंटर में लोकेटेड है, राइट. और कहाँ पे है? इट इज़ इनसाइड अ मोस्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, दैट्स द क्रेनियम. एंड अब क्रेनियम के अंदर है तो वो प्रोटेक्शन, लेकिन स्टिल गॉड हैज़ क्रिएटेड अराउंड योर ब्रेन 3 layers, 3 प्रोटेक्टिंग कवरिंग. मतलब जो हड्डी का ढांचा है, इफ दिस इज़ द बोन यू आर हैविंग अराउंड योर ब्रेन, इस बोन के अंदर यू हैव 1 layer दैट्स कॉल्ड एज द फर्स्ट लेयर, जिसको हम बोलते हैं पाया मैटर. सेकेंड लेयर जिसको हम बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर, एंड द थर्ड लेयर जिसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, ड्यूरेबल ड्यूरा मैटर. ठीक है, इन तीनों लेयर को मिला के बोला जाता है मेनिंजेस. क्या बोलते हैं हम इसे? मेनिंजेस. सो दीज 3 layers, जो ऊपर की जो हड्डी है, ये जो ब्लैक दिख रहा है, दैट इज़ द बोन. बोन के बाहर अंदर का जो एरिया है, इट इज़
covered by 3 layer. तो अगर हम ऊपर से travel करेंगे into the brain, you remember the first layer will be your dura matter, second layer will be arachnoid matter, third layer will be your pia matter. और अगर हम ब्रेन से होते हुए बाहर की ओर जाएंगे तो पहला होगा पाया मैटर, फिर होगा एरेक्नॉइड मैटर, फिर होगा ड्यूरा मैटर, राइट. ड्यूरा मैटर वो जो सबसे हार्ड लेयर अभी जो वीडियो में दिखाया, मोस्ट हार्ड, इट्स वेरी वेरी टफ, बहुत ही हार्ड होता है, उसको कितना भी खींचेंगे तो नहीं टूटता, इट्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, सो वील रीड इट हियर. ड्यूरा मैटर को थोड़ा सा अच्छी तरह पढ़ेंगे, पहले अंडरलाइन कर लो. इनर टू द बोनी कवरिंग 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज मेनिंजेस. मेनिंजेस बोलते ही याद आना चाहिए 3 लेयर, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड एंड द पाया मैटर और पिया मैटर, वॉट एवर यू वांट टू से. तो ड्यूरा मैटर को ध्यान से देखेंगे. आउटर मोस्ट टफ, नॉन वैस्कुलर, मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते. अभी जो वीडियो में उसमें देखा था एरेक्नॉइड मैटर, उसमें छोटे छोटे वेन्स वगैरह दिख रहे थे, आर्टरीज वगैरह दिख रहे थे, ब्लड वेसल्स वे विजिबल, सो दे आर वैस्कुलर. एंड नेक्स्ट इज थिक. ड्यूरा मैटर थिक है, फाइब्रस है एंड अटैच टू द बोन, क्रेनियम रीजन को अटैच करता है. और ड्यूरा मैटर के बाद की लेयर कौन सी है? एरेक्नॉइड मैटर बाय सब ड्यूरल स्पेस. ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, जिसके अंदर सेरस फ्लूइड भरा होता है. देन नेक्स्ट इज एरेक्नॉइड मैटर, जो कि बीच की लेयर है, मतलब ड्यूरा और पाया मैटर के बीच का जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर, मिडिल थिन लेयर. देन नेक्स्ट पेज में जाइए. अब जो एरेक्नॉइड मैटर है और पाया मैटर, उसके बीच में भी स्पेस है जिसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस. ठीक है, एक और बारी मैं बताती हूँ. सबसे पहले ये है आपका ड्यूरा मैटर, फिर दिस इज योर एरेक्नॉइड मैटर. तो जो ड्यूरा मैटर के बाद वाला जो रीजन है, ये जो एरिया, जो गैप है ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच, ये ड्यूरा है और ये एरेक्नॉइड है. तो एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं सब ड्यूरा स्पेस. ओके, सब ड्यूरल स्पेस, जिसके अंदर सेरस फ्लूइड होता है. अब एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में भी स्पेस है, इस जगह को बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस. एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस. और इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं CSF. व्हाट डू यू कॉल इट? cerebrospinal fluid. So there can be a question, where is cerebrospinal fluid located? Cerebrospinal fluid is located between pia mater and arachnoid matter. That's the subarachnoid space. Okay, then the next one is pia mater. सबसे innermost and the most delicate, highly vascular membrane है जो कि ब्रेन को टच करता है. Okay, so these are the 3 layers called as meninges. Let's talk about CSF, cerebrospinal fluid. ये है क्या cerebrospinal fluid? It is the lymph-like extracellular fluid. और कौन बनाता है? choroid plexus बनाता है. choroid plexus is a kind of cell in ventricles, but just remember that it's a name of the tissue, or you can simply say the cell of ventricles. अब आप बोलोगे ventricles क्या है, वो सब आपको अगले टॉपिक में और क्लियर होगा. So it is a fluid that is basically fluid, but it's like a lymph only. Lymph inside a body, like in circulatory system we have studied lymph, no? So they actually, what do? They fight against infections, they protect the brain. So where exactly are they formed? कहाँ बनते हैं? Inside the ventricle of the brain. Ventricle मतलब
ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसेस हैं, उस स्पेस के अंदर कोरॉइड प्लेक्सस मतलब एपेंडाइमल सेल से बने हुए कोरॉइड प्लेक्सस रीजन है। उन स्पेसेस के जो सेल्स का फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ CSF। CFS इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कौन बनाता है ये? पाया मैटर, जिसके अंदर पाया मैटर में स्पेसिफिकली कौन से एरिया से बनता है? कोरॉइड प्लेक्सस। एंड what exactly are its function? Let's talk about the function from here. The meninges okay, यहाँ से रीड करेंगे। okay, the meninges and CSF act as a shock absorber. So first, सबसे पहला फंक्शन है शॉक अब्जॉर्बर। नंबर 2, प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। नंबर 3, it also maintains constant pressure inside the cranium. Number 4, it helps in exchange of nutrients and waste between blood and brain tissue. Number 5, it helps in the supply of oxygen to the brain. Then 6, it protects the brain from desiccation. Desiccation मतलब सूखने से बचाता है, drying. So it has to be moisturized. So CSF is doing that work. और CSF होता कैसा है? Alkaline fluid होता है। उसकी ग्रेविटी कितनी होती है? 1.005। एंड कुल मिला के कितना CSF होता है इन एंड अराउंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? ओके, वील अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। How do you remember the way to your friend's house? Why do you blink without you ever thinking about it? If you think it is your brain, you are correct. Your brain runs the show and controls just about everything you do, including those activities which are going on inside your bodies. All such actions have to be properly timed and coordinated, which is done by the nervous system and the hormonal system. Let's understand the nervous system. The nervous system is an organ system containing a network of specialized cells called neurons that coordinate the actions of an animal and transmit signals between different parts of its body. The nervous system is divided into two main systems. The central nervous system, that is CNS, and the peripheral nervous system. The spinal cord and the brain make up the CNS. Its main job is to get the information from the body and send out instructions. The peripheral nervous system is made up of all the nerves which transmit the messages from the brain to the rest of the body. The peripheral nervous system connects the CNS to sensory organs, such as the eye and ear, other organs of the body, muscles, blood vessels, and glands. The central nervous system is comprised of the brain and spinal cord, which is located in and protected by the skull and the vertebral column. Neurons are the basic building blocks of the nervous system. These specialized cells are the information processing units of the brain, responsible for receiving and transmitting information. Each part of the neuron plays a role in the communication of information throughout the body. Let us learn the structure of a neuron. A neuron has three basic parts: the cell body, the axon, and the dendrites.
Cell body contains a well-defined nucleus surrounded by a granular cytoplasm. The cell body is also known as perikaryon or cyton. Dendrites are branched cytoplasmic projections of the cell body. They are for receiving impulses from the axon of another neuron. Dendrites of one axon of the other neuron are separated by an extremely narrow space called the synaptic cleft. Through this synaptic cleft, nerve impulses are transmitted. The axon, also called the nerve fiber, is a long process of a neuron cell body. The axon is specialized to carry messages. An axon of one neuron may have enough branches to make contact with as many as 1,000 other neurons. Axons are covered by a protective layer of a white insulating sheet called myelin sheet. The myelin sheet shows gaps throughout the length, which are called nodes of Ranvier. The end portion of axons have swollen bulbs called axon terminals that store certain chemicals called neurotransmitters. There are three different types of neurons. The first one is sensory neurons, which carry impulses from the sense organs to the central nervous system. The second type of neuron is motor neuron, which carries impulses from the CNS to muscles or glands of our body. And the third type of neuron is interneuron, which connect various neurons within the brain and spinal cord. It carries information between the motor and sensory neurons. Did you know that the brain is the most complex organ in the human body? Let us learn more about it. Okay, so I believe you're clear what is CNS. मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम. आपका जो नर्वस सिस्टम है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3. वन इज़ सेंट्रल, देन पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमस. सेंट्रल मतलब जो बॉडी के सेंटर में लोकेटेड है, तो वो है हमारा ब्रेन, और ब्रेन से निकलता हुआ स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डी के बीच के कैनाल जो स्पेस है उसके अंदर से इट गोज़ डाउन टिल द कॉकेक्स रीजन. एंड इस स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व्स निकलती हैं और इवन ब्रेन से भी निकलती हैं, सो वी हैव दीज नर्व्स. All these nerves are going to your skin, going to your eyes, going to your ears, connecting you to the world, to your surrounding. That's by peripheral nervous system. PNS, periphery, बाहर का. Okay? आपको स्किन में चटका लगता है तो it is through peripheral nervous system the information is going to your brain. And जब आप कुछ खाते हो तो उसका digestion होना है, तो that is done by the autonomous nervous system. Remember that. Okay? Autonomous, so something related with your internal visceral organs, आपकी alimentary canal से related, your internal cardiac movement, all those things are related with autonomous nervous system. Okay, so next video you learn more about the next topic.